grand journey is strengthened by those who believe in its vision. We extend our heartfelt gratitude to all our sponsors and support has empowered VIJAYPATH 2026 to become a reality. Please join us in appreciating our proud sponsors, our co-sponsor Gangavati Silk Palace, our associate sponsor Namma Kitchen, and our in-kind sponsors Arogya Cafe, Ahmedabad Annex, Plants Alley, Define Perfumes, Microfinish, Menka Inn, and SP Associates. Thank you for partnering with us in creating a platform that inspires excellence, innovation, and future leadership. To formally unveil the spirit, vision, and purpose behind VIJAYPATH 2026, we now invite one of our student event coordinators, Mr. Pranav Lingdali, to address the gathering and introduce the essence of this magnificent fest. Good morning, everyone. We often hear that the world of business is a jungle or a cave. But at KLE's College of Business Administration, we believe it is something far more ancient. We believe management is the art of processes that are much bigger than ourselves. This is the essence of VIJAYPATH 2026. The word VIJAYPATH doesn't promise just a trophy at the finish line. It defines a process. It is a path of victory, but it is a path paved with pressure, uncertainty, and the constant need for evolution. Because in this arena, victory is claimed by those with the courage to stand firm when the elements collide. This year, we chose the 5 primordial elements as our heartbeat because the 5 elements are the ultimate metaphor for a leader's journey. We speak of fire because a leader who cannot handle the heat of a crisis can never ignite a team. We speak of ether because a marketer who cannot visualize the infinite will always be trapped by the ordinary. We speak of wind because finance isn't just numbers, it's navigating the invisible currents of a global storm. We speak of water because strongest structures will fail if they lack the fluidity to adapt to the people within them. And we speak of earth because without a grounded and strategic foundation, the tallest empires crumble. VIJAYPATH 2026 is our management odyssey. It is a journey from the theoretical to the primordial. We have designed these 2 days to be a crucible of management. We want to see how you react when the elements collide. We want to see if you can turn the chaos of competition into the order of a winning strategy. You are now standing at the trailhead of the Odyssey. The elements are aligned. The silence has been broken, and now it is time to see who truly has a spirit to claim the victory. My name is Pranav Lingdali, and I am one of your student event coordinators. And I don't just welcome you to a fest. I welcome you to your own evolution. The path is open. Let the management odyssey for you. Thank you. Thank you, Pranav, for presenting the soul and philosophy of VIJAYPATH 2026. We know that every vision has a story, every legacy has a beginning, and every victory has a journey. Ladies and gentlemen, presenting before you the glimpse of VIJAYPATH 2026. Now, I request Team CBA Creation to play the video.
What we witnessed just now was not merely a video. Thank you, Team CBA Creations, for this amazing creation. Now we request our student coordinators to escort all the dignitaries on the dais. At this moment, we take pride in inviting a mentor whose guidance, encouragement, and commitment have constantly inspired excellence within our institution. We respectfully invite our faculty event coordinator, Professor Sanya Hiru, to deliver the welcome address. Good morning to our principal, academic coordinator, our faculty members, and the bright, ambitious minds gathered here today. As the faculty event coordinator, it is my distinct honor to welcome you all to VIJAYPATH 2026. In the halls of academia, we often talk about business administration as a set of rules, case studies, and balance sheet. But at KLE's College of Business Administration, we believe that management is a dynamic living force. It is the ability to maintain balance in the world that is constantly shifting. That is why the theme of the Elemental Odyssey is so fitting today. By anchoring this year's fest in the 5 elements, we are challenging our students to look beyond the surface. To our visiting participants, you are not just here to represent your colleges, you are here to test the limits of your professional preparation. VIJAYPATH is designed in such a way that it is the simulation of corporate world, a place where theoretical knowledge meets the pressure of real-time decision making. Our student coordinators and the entire organizing team have worked tirelessly to ensure that this Odyssey is a rigorous and it is rewarding. We have curated these streams to ensure that when you leave this campus, you do so with a deeper understanding of what it takes to lead an unpredictable global economy. I urge every participant to compete with integrity, to participate with purpose, and to embrace the challenges of these 2 days. May the best minds rise to the occasion. Once again, I welcome to the KLE Society's College of Business Administration. Welcome to the path of victory. Let the Odyssey begin. Welcome, everyone. Thank you, ma'am, for your motivating and gracious words. Music has the power to unite hearts even before the words do. To celebrate this auspicious beginning with harmony and positivity, we now invite our student Sunidhi Telesera for the invocation.
What a peaceful performance indeed. Let's appreciate her with a huge round of applause. In Indian tradition, lighting the ceremonial lamp symbolizes the removal of darkness and the awakening of wisdom, hope, and knowledge. As VIJAYPATH 2026 begins its glorious journey, we request all the dignitaries to please come forward and light the lamp. Request any two participants to please voluntarily come on the stage and lighten the lamp. Any two participants. Can we request with your hands you would like to elaborate? Anybody? Come please. Yes, thank you. Can we have round of applause for them? As the lamp glows brighter, may it symbolize the enlightenment of minds, the strength of leadership, and the spirit of victory. Great leadership deserves great gratitude. As a token of appreciation and respect, we now request our academic coordinator, Professor Basit Bilal, to welcome our beloved principal, Professor Ramakant Tegoji. I now request Professor Santosh to welcome our academic coordinator, Professor Basit Bilal. I request Professor Nivedita to welcome our faculty event coordinator, Professor Rajshri Chidi. I request Professor Jaslyn to welcome our faculty event coordinator, Professor Sanya Hiri. I request Mr. Manu Guri to welcome our chairman portfolios, Mr. Kiran Magundanavar. I request Mr. Vipul to welcome our student event coordinator, Mr. Pranam Tormani. I request Mr. Likhit Rathod to welcome our student event coordinator, Mr. Pranav Likhali.
I request Mr. Rahul Tambe to welcome our student event coordinator, Mr. Rajat Bhakde. Thank you, dignitaries, for your valuable presence and blessings. Now I request our respected principal, Professor Ramakant Tegoji, to address the gathering. Thank you, Vidita, Prince. Good morning, everybody. My colleague, Academic Coordinator Basit Sir, Event Coordinators Professor Rajeshri, Professor Sania, Event Student Coordinators Pranav, Rajat, Student General Secretary, Chairman, Portfolios Kiran, my dear colleagues, student organizers, and all dear participants. This day is very special for every one of us who is working and studying in KLE BBA Hubli. In many ways, this day stands special because after 1 decade, we are organizing a management fest. It's not the case that we have never organized any inter-college competitions. We have been organizing many inter-college competitions, but the last management fest was organized almost 10 years back. So the duration after the 10 long years that any organization is doing something or organizing something, that brings a speciality into it. But at the same time, when we were thinking what to name it, because after everything, what comes on this earth gets a name. May it be a life or may it be an innovation. So that everything which gets the name itself reflects the uniqueness into it. Then how can competition be exception? We pondered upon many names, but one name that stood really different was VIJAYPATH. Now, let me tell you the significance of this name VIJAYPATH. You might have observed, now all the students who are sitting in front of me must be 18, 19, 20 max. But in these 20 years of life, in these 19, 18 years of life, if you have observed carefully around us, you will find that everybody is walking on a path. Now, walking on a path could be somewhat wrong, but there are many paths in front of us. Which path to choose to walk is a decision that will decide the destiny or future of our life. You might have found yourself many times in situations where you might have thought, अब मैं कौन सी दिशा में जाऊं? अब मैं कौन से रास्ते पे चलूं? But that one crucial moment will be the deciding moment because the path that you will choose will decide your destiny. There is a very famous quote which says, decisions decide the destiny. I don't know how many people among you have seen the movie called Swades, directed by Ashutosh Gowarikar, lead role played by Shah Rukh Khan. In the first half an hour of the movie, there is a very beautiful and meaningful scene is there. उस मूवी में पहले आधे घंटे में एक बहुत अच्छा और मीनिंगफुल सीन है. शाहरुख खान अपनी कैरावैन में अपनी छोटे से गांव में दादी माँ को मिलने के लिए जाता रहता है और उसी दौरान वो रास्ता भटक जाता है. अब उसके पास जीपीएस होके भी चलता नहीं क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं है. तो ही फाइंड्स वन प्रीस्ट, एक साधु उस रास्ते में दिख जाता है और उसे पूछता है ये चरणपुर जाने का रास्ता कहाँ पे है. तो साधु बोलता है वो तो पीछे रह गया, ये तो रास्ता चरणपुर जाता नहीं है. तो शाहरुख खान के मुंह से एक सेंटेंस निकलता है, वो बोलता है शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया.
एंड इन रिस्पॉन्स टू हिज सेंटेंस वो साधु बोलता है, बेटा रास्ते कभी गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं। बिकॉज वो जिस रास्ते पे जा रहा था उस रास्ते का भी एक मकाम था, एक डेस्टिनेशन था। आज सुबह मैं बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुन रहा था, उस पॉडकास्ट में एक जो स्पीकर था, he said one sentence, he visited one cemetery, वो एक स्मशान भूमि को भी विजिट करता है और वहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ रहता है, मुझे इसी मुकाम पे आना था, बस इस मुकाम पे आते आते मैं जिंदगी जी गया। गाइस, वी हैव ओनली वन लाइफ, हमारे पास सिर्फ एक जिंदगी है। वी डोंट नो आफ्टर अवर डेथ whether there is something called another birth or not, but let's assume there is no. तो इस एक जिंदगी में हमें ऐसे कई रास्ते हमारे सामने आएंगे जिस पे चल के हमें हमारे अलग अलग मकाम हासिल करने पड़ेंगे। लेकिन इस रास्तों पे चलने से पहले हमें ये सोचना भी उतना ही जरूरी है, क्या मैं इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूं। अब जब भी जर्नी के लिए निकलते हो, यू माइट बी प्लानिंग टू गो आउट ऑन वेकेशन विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। उससे पहले हम तैयारी हमेशा करते हैं, राइट? हम बैग भर के कपड़े लेते हैं, बाकी का सामान लेते हैं, मोबाइल, चार्जर, खाने का सामान, गाड़ी में हवा चेक करते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं, ऑयल लेवल चेक करते हैं, कूलेंट चेक करते हैं, सब कुछ। ये तैयारी किस लिए होती है? इसके पीछे पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है? मकसद एक ही होता है कि हम जिस रास्ते पे चलेंगे उस रास्ते पे अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं, अगर कुछ संभावित घटनाएं घटती हैं, तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये जो तैयारी है ना, ये तैयारी ही मेरे ख्याल से रियल एसेंस है हमारी जिंदगी का। हर कोई रास्ते पे चल रहा है। मुझे याद है वो दिन when I was pursuing my masters and I have had one habit of collecting autographs from my professors on the day of send off or farewell. मैं मेरे एक प्रोफेसर के पास गया, मैंने उनके सामने मेरी डायरी रखी, पेन दिया, मैंने बोला सर नीड योर ऑटोग्राफ एंड अ मैसेज ऑल्सो। उन्होंने इतना खूबसूरत मैसेज उसमें लिखा। उन्होंने लिखा, जब हम हाईवे पे चलते हैं तब हम बोर हो जाते हैं। क्यों? रास्ता सीधा है, मोनोटोनस है। लेकिन हम जब जंगल में चलते हैं तब हमारा मन कभी नहीं थकता, हमारा मन कभी बोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें हमारा खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। गाइस, रास्ता बनाना और बने हुए रास्ते पे चलना जमीन आसमान का फर्क है। मेरे ख्याल से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, हर कोई अपना अपना रास्ता बना रहा है, ढूंढ रहा है और उस रास्ते पे चलते हुए कामयाब होने की कोशिश भी कर रहा है, हर कोई। मुझे लगता है ये जो इवेंट्स हैं, these events are the opportunities to explore our abilities, to find ourselves. इवेंट्स दो लोगों की वजह से होते हैं, एक ऑर्गेनाइजर्स एंड द पार्टिसिपेंट्स। दोनों का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूं कि स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता एक टू व्हीलर की जैसे है। अगर एक व्हील स्टूडेंट का है, दूसरा व्हील टीचर का है, अगर दोनों व्हील अच्छे से चलेंगे तो ही गाड़ी अच्छे से चलेगी। इवेंट का कुछ ऐसा ही है। सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स अच्छे हैं और पार्टिसिपेंट्स की एनर्जी डाउन है, कुछ नहीं होगा। पार्टिसिपेंट्स की एनर्जी हाई लेवल पे और ऑर्गेनाइजर्स की एनर्जी डाउन है तो भी कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस विजय पथ को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स की एनर्जी नहीं, पार्टिसिपेंट्स की एनर्जी भी उतनी ही जरूरी है। मैं चाहता हूं विजय पथ के इस रास्ते पे चलते वक्त खुद को इसमें झोंक दीजिए, जी जान लगा के कंपटीशन कीजिए, जी जान लगा के राउंड्स को फेस कीजिए। यू मे फाइंड सम डेलिबरेट प्रेशर सिचुएशंस जो पर्पसफुली क्रिएट की जा सकती है, लेकिन यही मौका है खुद को साबित करने का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉम्पिटिशंस होते हैं खुद को साबित करने के लिए, but at the same time ये भी उतना ही सच है कि अगर कोई इंसान पहाड़ चढ़ने की कोशिश करता है, एक नहीं 10 इंसान, चोटी पे पहले सिर्फ एक ही इंसान पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग हार गए। कोशिश करते रहना इंसान की जरूरत है और वो कोशिश ही होती है जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती है। मेरे ख्याल से इस विजय पथ पे चलने से पहले आप सब लोग 2 मिनट के लिए खुद को प्रॉमिस कीजिए कि इन 2 दिनों में जो भी मैं कॉम्पिटिशन फेस करूंगा या करूंगी, इसमें मैं कामयाब होने के लिए
पूरे जी जान से मेहनत करोगे। There will be preparations, there will be assignments given to you, right? Focused रहो। अगर कोई कॉम्पिटिटर, अगर कोई भी खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले ऐसे सोचे शायद मैं जीत जाऊंगा, शायद मैं जीत जाऊंगा, तो कभी नहीं जीतेगा। लेकिन अगर वो ये सोच के मैदान में उतरता है कि मैं जीतने के लिए मैदान में उतरूंगा, तो उसकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती है। मैं चाहता हूं कि हर पार्टिसिपेंट इसी भावना से मैदान में उतरे कि मुझे जीतना है, compete करना है। Judges, all our judges are coming from industry. No faculty from our college is going to judge any round. Let me tell you in the outset of this competition itself, we believe in transparency. We absolutely do not believe in manipulations. आप सोच रहे होंगे सर आप ये बात अभी क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है ये बात अभी कहना ही सही है। Because ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज है ना जो विश्वास दिलाती है, और बीइंग द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे जजिंग होगा, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी क्यूमुलेटिव स्कोर्स आएंगे, वो वैसे के वैसे कंसिडर किए जाएंगे और विजेता घोषित किया जाएगा। इस 2 दिन के कंपटीशन को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे हाथ काम कर रहे हैं। उन सबको अप्रिशिएट करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अभी नहीं, कल शाम। But before this, I must not forget those people also who have supported us financially to organize this competition. मेरे स्टूडेंट्स ने अभी यहाँ पे स्पॉन्सर्स का नाम लिया, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है to mention their names. So I would like to thank all our sponsors, starting with Gangavati Silk Palace, Namma Kitchen, Equity School, SP Associates, आरोग्य कैफे, डिफाइन परफ्यूम। आप पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया, लेकिन आपकी जो वेलकम किट में आपने थोड़ा सा एक बॉटल पाया होगा, वो बॉटल परफ्यूम का है। तो हम चाहते हैं कि आपका स्वागत खुशबू से किया जाए। सो थैंक्स टू डिफाइन परफ्यूम्स, अहमदाबाद एनेक्स, प्लांट्स LA, लिंगदली फाउंडेशन, मेनका इन, माइक्रो फिनिश, एंड वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पता है ये ऐसे पहली बार हुआ शायद मेरे टेन्योर में कि हमें और एक स्पेशल स्पॉन्सर मिला है। और स्पॉन्सर पता है कौन है? जस्ट 15 दिन पहले हमारे स्टूडेंट्स कहाँ गए थे? मैंगलोर गए थे, उजिरे। वहां पे उन्होंने जनरल चैंपियनशिप जीती वहां पे, एंड दे वन द प्राइज मनी ऑफ 15,000 rupees, एंड दे ऑल सेड सर वी वुड लाइक टू गिव दिस एंटायर 15,000 rupees फॉर विजयपथ एज अ स्पॉन्सर। आई थिंक ये जो बड़ा दिल है ना, ये बड़ा दिल आपको बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच आवर स्पेशल स्पॉन्सर्स। सो आई convey my best wishes on behalf of my all colleagues, our management, my all student organizers, each one of you. Welcome to KLE BBA Hubli. Wish you all the best, give your best, and come with the flying colors. Thank you so much and all the best. Thank you so much, sir, for your motivating and gracious words. As we move forward into the competitive arenas of VIJAYPATH 2026, we request all the participants to carefully note the event allocations and reporting instructions. To guide everyone regarding classroom allocations and event reporting, we invite Mr. Ranjan Barclay, Student Event Coordinator, to address the gathering. Good morning, everyone. I will be announcing the stream-wise allocations for classrooms. For best managers, the classroom allocated are classroom 14, 15, and 16. For finance, the classrooms are 10, 11, and 12. For marketing, the classrooms are 1, 2, and 3. For human resource, the classrooms allocated are classrooms 7, 8, 9. And for operations, the classrooms allocated are 4, 5, and 6. I request all the volunteers to guide participants to their respective classrooms. Thank you.
We request all the volunteers and participants to please be seated. And also, participants, in your registration kits, there is a schedule given to you. So if you have any confusion regarding where your rounds are there or when it is going to happen with the timings and respective locations of classrooms, it has been mentioned clearly over there. And even after that, if there is any confusion, you can contact any of the volunteers or the coordinators. Thank you. Thank you, participants. Participants are requested to report their respective venues on time and maintain the spirit of professionalism throughout the fest. With this, the inauguration ceremony of VIJAYPATH 2026 comes to a successful conclusion. But this is only the beginning. Over the next 2 days, the campus will witness strategy, innovation, leadership, creativity, resilience, and unforgettable memories. To every participant gathered here, compete with passion, lead with integrity, and embrace every challenge as an opportunity to grow. May VIJAYPATH 2026 become not just a fest you attended, but a journey you will remember forever. Welcome to VIJAYPATH 2026, Victory Through Valor. With this, we declare VIJAYPATH 2026 officially open. All the very best participants, go conquer your element. Until then, I, Vinita Kurwa, I, Prince Mehta, formally signing off as the Masters of Ceremonies of today's inaugural ceremony. Thank you. I request all the volunteers to please guide the participants to their respective classrooms. Participants, please move in an orderly manner downstairs to your respective classrooms. Thank you.